Hello everybody, a very warm welcome to all of you. Hi guys, this is me Vani Mehra and I welcome you all to Vani Academy. Today here we have in our session India and Indian Ocean region. India and Indian Ocean. An extremely significant topic in present times when we talk about the Indian Ocean region, the dynamics which are changing in the Indian Ocean region and the kind of scenario that exists today. Indian Ocean covers approximately 1/5 of the total ocean area of the world. This entire ocean area that you can see right now, this area covers 1/5 of the total ocean area of the world. This is a significant, you can say, the space that Indian Ocean is covering is a significant space. This entire space is the 1/5 area of the ocean of the world. That means this particular water body, this particular ocean is a mass area, a mass piece of water that is existing. It is the smallest geological, youngest and physically most complex of all three major oceans. So yes, definitely it is the youngest, it's the most evolving, it's the newest that is there, that's existing. And after all, it stretches for more than 6,200 miles. 6,200 miles. It stretches to 6,200 miles, which is approximately 10,000 kilometers between the southern tip of Africa and Australia, the southern tip of Africa here and Australia this side. It is existing within this 10,000 kilometers, and without its marginal seas, it has an area of about the total area I'm going to tell you is 2836 0000. Just imagine the volume that it covers. This is the amount of area that it is covering, square miles. 28 crores 3,60,000 square miles. This is the area that it covers. And without its marginal seas, I'm talking about. The decision by the International Hydrographic Organization, this took place in the year 2000, to delimit a fifth ocean, the Southern Ocean, remove the portion of the Indian Ocean south of 60 degrees south latitude. So the decision was taken, and Indian Ocean average depth, if I talk about what is the depth, what is the depth of the Indian Ocean? It is 12,990 feet, which is 3,960 meters. This is huge. And its deepest point is, let me tell you, the deepest point, what is the deepest point in Indian Ocean? The deepest point is the Sunda Deep of Java Trench of the southern coast of island of Java. That is Indonesia. We are talking about Indonesia over here. Okay. So this is the entire dynamics you can say about the Indian Ocean, but there is a lot of significance. We are talking about this topic today because this topic or this particular area has a lot of significance. So let's understand what is the major significance of the Indian Ocean. Why are we talking about it? See, there are four critically important assess of, you can say, waterways, very, very important, four critically accessible waterways. Which are these? The first one being the Suez Canal, which is in Egypt. The second one being Bab el Mandeb in Djibouti and Yemen. The third one being Strait of Hormuz, which is Iran and Oman. And the fourth one being Strait of Malacca, which is Indonesia
and Malaysia. So Indian Ocean provides major sea routes. There are different kind of sea routes that exist in the Indian Ocean. Major sea routes connecting the Middle East. The Middle East is connected. The African region is connected. Then East Asia with Europe and America. It carries a particularly heavy traffic of petroleum and petroleum products from the oil fields of Persian Gulf and Indonesia. It has a significant fisheries resource also, not only sea route, but at the same time also has fisheries. Fisheries resources to the bordering countries for domestic consumption and export. Fishing fleets from Russia, Japan, South Korea, Taiwan also exploit the Indian Ocean mainly for shrimp and tuna. There are different type of fishes, seafood for which Indian Ocean is accessed. Different countries come here and they access the sea for the ocean for the fishing, for example, like I told you, mainly for shrimp and tuna. So how many countries come here? Like Russia also comes. Japan, South Korea, Taiwan, all of them are the ones that are excited, or you can say interested, to be a part of this region. And the next important factor about this region is there is a large reserve of hydrocarbons. Large reserve of hydrocarbons. So what is it? See, they are being tapped in the offshore areas of Saudi Arabia, Iran, India, and Western Australia. There is approximately, you can say, 40% of world's offshore oil production comes from the Indian Ocean. And then at the same time, there is a lot of beach sands rich in heavy minerals, and offshore placer deposits. They are actively exploited by bordering countries, particularly India, South Africa, Indonesia, Sri Lanka, and Thailand. There are major seaports also. For example, Chennai in India, Colombo in Sri Lanka, Durban in South Africa, Jakarta in Indonesia, Kolkata in India, Melbourne in Australia, then also Mumbai. So these are different areas, these are the different major seaports that exist. Obviously, seaports are there because, yes, the ocean is there. So seaports are there from which trade becomes very easy for countries. And intertrade relation of India with many countries is possible only because of the trade routes that are existing. So yes, definitely, these trade routes are very important. Now, international trade also happening. Indian Ocean and its various channels are responsible for 2/3 of world's oil shipment, 1/3 of world's cargo movement, and nearly half of its container traffic movement. So yes, that is also very significant and required. So having such trade routes is very, very essential. Now let me talk about Indian Ocean people and regions. People and regions. See, it is approximately home to 2.7 billion people. Right? States whose shores are washed by the ocean are rich in cultural diversity
and they are rich in languages. There are different languages existing, religion, tradition, arts and cuisine. Obviously सिर्फ ocean नहीं है, ocean के पास जितनी भी countries है वो क्या है, वो एक significant, these are the significant areas which are telling us कि कितनी तरह की languages, कितनी तरह की diversity के अंदर हम रहते हैं, कितनी diverse country का हम part है. तो ये बहुत important चीज है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है. So this is also that is very important over here. Now एक और चीज हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगर मैं बात कर रही हूँ वेरिएशन की, so they vary considerably in terms of their areas. हर स्टेट की, हर कंट्री की अलग पॉपुलेशन है. ठीक है. एरिया वाइज ये डिफर करता है, पॉपुलेशन वाइज ये बहुत ज्यादा डिफर करता है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइज बहुत डिफर करता है. ठीक है. ये सारे क्राइटेरियाज है बेसिकली अगर आप देखोगे. एंड दे में ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब रीजन. जैसे बहुत सारे सब रीजन्स है, सब रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है. सब रीजन्स कौन से हो गए? जैसे हो गया ऑस्ट्रेलेशिया, फिर हो गया साउथ ईस्ट एशिया, फिर हो गया साउथ एशिया, फिर हो गया वेस्ट एशिया, फिर हो गया ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका. ये सारे जो रीजन्स है ये हो गए. ईच विद देयर ओन रीजनल ग्रुपिंग. हर किसी का अपना रीजनल ग्रुपिंग है, हर किसी ने अपनी ग्रुपिंग बनाई है. कोई आसियान का पार्ट है, ठीक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का पार्ट है, कोई सार्क का पार्ट है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का पार्ट है, कोई जीसीसी का पार्ट है. मतलब हर कोई अलग अलग ग्रुपिंग का पार्ट है. टू नेम अ फ्यू. डिस्पाइट सच डाइवर्सिटी इन डिफरेंसेस, दीज कंट्रीज आर बाउंड टुगेदर बाय द इंडियन ओशन. इतनी वेरिएशन है, पॉपुलेशन अलग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग, दुनिया में हर चीज अलग, बट क्यों जुड़े एक दूसरे से? सिर्फ एक चीज के कारण, विच इज द कॉमनैलिटी, विच इज द इंडियन ओशन. क्योंकि ओशन ने इन सबको जोड़ के रखा है, इसीलिए ऑल दीज कंट्रीज आर टुगेदर. दैट इज व्हाई वी से Indian Ocean is about people, it is about regions. It's just not about being a water body. All right. So now we'll move forward with the next part, which is piracy. अब होता क्या है जब हम सी रूट की बात करते हैं ना, तो आपने वो मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन. उसके अंदर यू मस्ट हैव सीन की हाउ जो समुद्र के लुटेरे होते हैं कैसे वो चोरी करते हैं, और किस तरह से पायरेसी होती है, किस तरह से इलीगल काफी चीजें भी सामान जाता है, ट्रैफिकिंग के भी बहुत सारे केसेस आते हैं. इसलिए यू मस्ट हैव सीन द कस्टम डिपार्टमेंट बीइंग एक्सट्रीमली एक्टिव व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड थ्रू ओशंस और थ्रू पोर्ट्स व्हाटएवर. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पायरेसी इंडियन ओशन में कैसे होती है. देखिए, मोर देन 80 कंट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन. कम से कम 80 से ज्यादा कंट्रीज जो है इंडियन ओशन रीजन में अगर कुछ भी होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करती है. मोर देन 80 कंट्रीज. ठीक है. एंड अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द एड हॉक वॉलंटरी कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया. ये क्रिएट की गई थी 2009 में टू इन रिस्पॉन्स टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन. आई एम टेलिंग यू कौन सी बॉडी बनी थी. सो दे हैड मेड द ऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन अंडर So this was created in 2009, in Jan 2009 में ये create की गई थी. ठीक है. In response to UN Security Council Resolution 1851 on Somali piracy and armed robbery at sea. अब जो इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो है, इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो, it continues to report the territorial waters of littoral states and offshore waters as high risk for piracy. अभी तक ये बता रहा है कि किस तरह से ये जो एरियाज है जो स्टेट्स है आसपास की, किस तरह से they have a risk of piracy and there is armed robbery against ships, particularly in the Gulf of Aden, along the east coast of Africa, Bay of Bengal and Strait of Malacca. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आर्म रॉबरी होती है. अब समुद्र के बीच में अगर चोरी होगी तो फिर वहां पे पुलिस वालों को कैसे बुलाओगे और कैसे गार्ड करोगे खुद को? हाउ विल यू गार्ड योर शिप व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ द सी एंड यू सी
certain kind of, you can say, thieves coming or coming for robbery and all. So what will you do? Samundar mein jump to maar nahi doge. Obviously you need some protection, you need some body to work out on it. So these are the bodies that are working on it. The presence of several naval task forces. अब नेवी का जो काम है वो प्रोटेक्शन करना है बॉर्डर एरिया को भी, हमारे वाटर बॉडीज को भी, बट एट द सेम टाइम नेवल जो टास्क फोर्सेस होती है जो थोड़ा सा ध्यान रखती है इन सब चीजें ना हो ये चीजें, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे. तो नेवल टास्क फोर्सेस ने गल्फ ऑफ एडन एंड एडिशनल एंटी पायरेसी मेजर्स ऑन द पार्ट ऑफ शिप ऑपरेटर्स. जो शिप ऑपरेटर्स है वो भी काफी ज्यादा एंटी पायरेसी मेजर्स उठाते हैं, being protective of what they're carrying in the ships, taking all the documents along with them, like use of on-board armed security teams, on-board armed security teams. So it's like when you go to a club, when you go to a restaurant, you have these bouncers. कुछ भी बदतमीजी करोगे तो उठा के बाहर फेंक देंगे. तो ऑन बोर्ड आर्म सिक्योरिटी टीम्स क्या करेगी? दे विल बी ट्रेन्ड इनफ कि अगर कुछ ऐसा कोई सीन हो, सिनेरियो हो, तो दे हैव टू डील विद सच पीपल. सो दे आर बीइंग ट्रेन्ड. दे हैव रिड्यूस्ड इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी इन रिस्पांस. And there is also Somali-based pirates using hijacked fishing trawlers as motherships to extend their range, and they've shifted operation as far south as Mozambique Channel. तो पहले सोमाली में ये चलता था, बट अब मोजाम्बिक चैनल में ये सब शुरू हो गया है, चोरी चकारी होना. And this is something which is in the close vicinity of Maldives and northeastward to the Strait of Hormuz. Basically, India जो है उसका access है, उसका उस area के अंदर, we have a lot of, you can say in that area. That is why it's important to also protect these countries and the people of these countries, and all those who are traveling through the ship, all those who are going through the ship, they are also to be protected against the piracy. So, with respect to this, there is an operation that was being conducted. Operation Ocean Shield. The NATO Naval Task Force established this in 2009 to combat Somali piracy, concluded its operation in December 2016. December 2016 में operation complete हो गया. क्योंकि जो incidences थे वो काफी घट गए, and the last few years, and the European Union Naval Mission continues its operation in the Gulf of Aden and Indian Ocean. The first half of 2017 जो पहला आधा है, it has seen an increase in attack with 2 incidences. कम से कम 2 incidences जो है Gulf of Aden में देखे गए, and 1 in the Red Sea also, and 4 off coast of Somalia. What I'm trying to tell you is these things are still happening. So we cannot say कि anti-piracy measure लेने से piracy हट गई है. In fact, yes, they are there, and we really need to work out on that. So now we need to understand what exactly is the dynamics of India and Indian Ocean. So अब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7517 किलोमीटर की, याद रखना, ठीक है. एंड सराउंडेड बाय ओशन एंड सीज इन 3 साइड्स ऑफ इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज. 3 साइड से क्या घिरा हुआ है? ये पानी से, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ. अब इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अ टिपिकल कॉन्टिनेंटल पावर, मोस्टली ड्यू टू इट्स डिफिकल्ट लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना एंड पाकिस्तान. काफी डिस्प्यूट रहा इनका इन जगहों से. अब ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर डेज, इंडिया वांटेड दैट मेजर वर्ल्ड पावर्स शुड विथड्रॉ देमसेल्फ फ्रॉम द इंडियन ओशन, कि इंडियन ओशन से जो मेजर वर्ल्ड पावर्स है उनको हट जाना चाहिए. ऑफ whom was actually a threat to India's ideological inclination to the non-aligned movement. अब इंडिया अलाइन नहीं करना चाहती थी, तो इंडिया ने बोला कि जितना हो सके इंडियन ओशन रीजन को अकेला छोड़ दो और यहाँ पे पीस रखो. Don't get into conflict, in this particular area. This was something that we wanted. अब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद काफी चीजें बदल गई, पॉलिसीज बदल गई. तो क्या हो गया? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई, और साथ ही साथ में सप्लाई ऑफ ऑयल हुआ थ्रू ओशन एंड सीज. अब समुंदर के रास्ते से बहुत सारी चीजों का सप्लाई होना शुरू हो गया. ऑयल, then different trade of different spices, different kind of material which was being done through the water. So this was something that started happening. Approximately जो इंडिया की 80%, अगर हम बात करें एनर्जी की, 80% of India's energy imports traverse through Indian Ocean and its different channels. 1990 की बात है, 1990s की बात है. इंडिया became enthused about regional maritime cooperation. इंडिया ने कहा कि हम बाकी कंट्रीज के साथ एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बनाएंगे.
रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन, ताकि हम अपने रीजनल टाइज बेटर कर सकें। अब हुआ क्या, एज एक्सप्रेस्ड, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही हैड एक्सप्रेस वेरी क्लियरली कि हमारे लिए, फॉर अस, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ स्ट्रेटेजिक ब्रिज विद नेशंस इन आवर इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड मैरीटाइम नेबरहुड। द प्राइम मिनिस्टर सेज कि हमारा जो नेबरहुड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारा ये पॉलिसी ऑफ रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन से नेबरहुड और एक्सटेंडेड नेबरहुड दोनों के साथ, if our relations get better, then why not? Why don't we actually go in for such agreements? This is something that he said. और इंडियन ओशन रीजन इज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पॉलिसी प्रायोरिटीज। इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और इंडिया का जो अप्रोच है, इट इज एविडेंट इन द विजन ऑफ सागर, द प्रोग्राम सागर, which means ocean, and stands for security and growth for all in the region. Security and growth for all in the region. I repeat, everyone, security and growth for all in the region. Sagar. Security and growth for all in the region. Such initiatives are a testimony that how much serious India is towards the Indian Ocean region, and also towards, you can say, having an inclusive development in this particular region. Okay, now I'm beginning on talking about the next aspect, which is the push for a comprehensive maritime policy. Policies are extremely important, but policies become effective only when they are implemented. ऐसे कोई भी पॉलिसी बनाओगे वो तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो। तो पुश फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम पॉलिसी, इट्स इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पे हमारे पास कोई मैरीटाइम पॉलिसी होती। So there are several factors which are pushing India towards a more comprehensive maritime policy. जैसे India's own desire to play a significant role. इंडिया का खुद का डिजायर है, इंडिया चाहता है कि वो भी एक अच्छा रोल प्ले करे। किस चीज के अंदर रोल प्ले करना चाहता है? टुवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम पॉलिसी। इंडिया कहता है मैं चाहता हूं कि मैरीटाइम पॉलिसी बने, और उसमें इंडिया भी अपना बहुत ज्यादा सहयोग देना चाहता है। So India's own desire to play this role is very important, which is supported by other countries. तो इंडिया को उन्होंने बोला कि चलो हम आपको सपोर्ट करते हैं, यूएस वालों ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, जापान ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब चाइना का जो स्पेशल एम्फोसिस है इंडियन ओशन की टुवर्ड्स, अब चाइना जो है वो भी डिजायर करता है इंडियन ओशन को। वो कहता है जो मेरी पुरानी सिल्क रोड प्रोजेक्ट है और जो ग्रोइंग वो कोऑपरेशन चाह रहा है बाकी नेशन के साथ, जैसे श्रीलंका से, मालदीव से, एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ ब्लू वाटर नेवी, these are perhaps a reminder to New Delhi, या मतलब you can say India, कि we have to strengthen our maritime policy, we have to strengthen our capability, manpower in the Indian Ocean, technology, considered to be its strategic backyard, because अगर हम ये नहीं करते तो हम चाइना से मात खा सकते हैं और कभी भी धोखा खा सकते हैं। तो it's important that we keep our focus here as well. And then we have geostrategic. Geostrategic dynamics. See, during the visit of Prime Minister to Mauritius, जब हमारे यहाँ पे Prime Minister, after he became the Prime Minister, he went to Mauritius and Seychelles. ठीक है? Underline that India is now ready to mark its presence in the wider geographical region of Indo-Pacific, and India may even consider building military bases outside its own national territory. तो इंडिया ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी कंट्री से बाहर जाके क्या बना सकते हैं? मिलिट्री टेरिटरी और मिलिट्री बेस। So this change perception should be understood in the context of Mumbai. जैसे 2008 में क्या हुआ था? 2008 Mumbai attack, if you remember. Perpetrators
which came through the seas, समुंदर के रास्ते से आए थे वो, and revealed that India still has to overcome few challenges in terms of safeguarding the coastline. हम अभी भी अपनी कोस्ट लाइन को सेफ गार्ड नहीं कर पाए, नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं कर पाए। तो 2008 का जो मुंबई का अटैक है, ये सबसे बड़ा सबूत है हमारी नाकामयाबी का। और जो गोल है हमारी कंट्री का, इंडियाज गोल, what is India's goal? India's goal is to seek a climate of trust and transparency. Respect for international maritime rules and norms by all countries. अगर सारी कंट्रीज नहीं मानेगी तो it will become very difficult. Third is sensitivity. We need to be sensitive. Every country needs to understand the position of another country. So sensitivity to each other interest, एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए भी। अगर इंडिया बोलता है कि इंडियन ओशन में मत आओ, तो घूम फिर के ना आए ना चाइना। समझना चाहिए कि ठीक है, चाइना जो है अपने उसमें खुश रहे, घर में खुश रहे। अब इंडिया को लगता है कि चाइना इंटरफेयर करने की कोशिश करे, तो दिस शुड बी एन अंडरस्टैंडिंग विद चाइना, इट शुड अंडरस्टैंड, एंड देन पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी इश्यूज। अगर पायरेसी हो रही है, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रही, जो भी हो रहा है, तो कम से कम उसे पीसफुली रिजोल्व किया जाए मैरिटाइम इश्यूज को। और इंक्रीज इन मैरिटाइम कोऑपरेशन। मैरिटाइम कोऑपरेशन कैसे बढ़ेगा? जब सारी कंट्रीज आगे आएगी, सारी कंट्रीज कहेगी नहीं नहीं ठीक है, हम प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ट्रेड सब पे ध्यान देंगे। तो फिर ये तो वही बात हुई कि जब बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे तो सारे आ गए, बट जब बात आती है नुकसान की तो सब लोग पीछे हट गए। मतलब इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग व्हेन यू नो वेंचर ऑल द टाइम। यू हैव टू बेयर द प्रॉफिट, यू हैव टू ऑल्सो बेयर लॉसेस। तो जब भी प्रॉब्लम आती है तो सारे बोलेंगे इंडिया को प्रोटेक्शन बढ़ानी चाहिए। क्यों? इंडियन ओशन साथ में लग गया, कोई गुनाह थोड़ी हो गया हमसे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी अगर बात आती है मेजर्स की, तो इंडिया को सबसे आगे लगना चाहिए। तो देयर इज नो कंसेंसस अमंग्स्ट द कंट्रीज। दे मस्ट अंडरस्टैंड their interests are also associated with the Indian Ocean, and if it goes in the wrong hands, and even if little portion of it goes in the accessibility of somebody else or some other country, it can create a lot of problem for us. तो हमारे लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इंडिया का जो विजन है फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज तो है ही, जैसे हमें पता है कि आसपास की कंट्री से है। So I'm making you write down a few points. Please write down this issues to address. Give a heading: issues to address. Issues to address. Write down. First point: considering indigenization. Considering indigenization of defense capabilities, comma, diversifying, नहीं, comma के बाद next point, diversifying sources for its naval hardware, diversifying sources for its naval hardware, third, increasing number of joint exercises, increased number of joint exercises with Indian Ocean region partner countries. ये हमें एड्रेस करनी है समस्याएं। नेक्स्ट इज प्रमोट ब्लू इकोनॉमी। प्रमोट ब्लू इकोनॉमी and sustainable use of marine resources in a cooperative manner.
in a cooperative manner. But obviously challenges are there. We can't deny the fact that challenges nahi hai. So we will also write down there are certain challenges. Please write down, everybody. If there are certain things that are making you write, it's for your good only. You can write it down. Even if you are making notes, if you are not making notes, then kindly make these notes. Certain challenges, because you have to maintain registers, notes, files, or whatever notes that you're preparing. So please write down challenges. Obviously, there are certain challenges that we are meeting in Indian Ocean region. The first one being ambitions and activities of China. Ambitions and activities of China. Write down China's ambition to control the sea lanes. China's ambition to control the sea lanes of communication in the Indian Ocean and its creation of a chain of friendly island countries, island countries escalates the existing bilateral tensions between India and China. India and China. Okay. So the next point over here in this only. अब एक हमारा प्रॉब्लम आ गया चाइना, एक हमारा चाइना के बाद जो अगला प्रॉब्लम है वो कौन सा है? पाकिस्तान. So the second point focus will be on Pakistan. Please write down. Another challenge emanates from Pakistan. Pakistan considers India as a constant threat which has to be deterred. D-E-T-E-R-R-E-D. Deterred. Write the last challenge in this. India's poor record in forming multilateral mechanisms. For example, SAARC, BIMSTEC, etc. Is another concern as due to its failure in the institutions
1 second. India is mostly aforementioned institutions. India is mostly viewed as a country of bilateral choice. Bilateral choice, full stop. Holistic maritime cooperation, on the other hand, holistic maritime cooperation, on the other hand, is based on multilateralism. Multilateralism. But yes, nevertheless, we are constantly learning for practicing having these security forces and maintaining security in different areas in the Indian Ocean region. India has also exhibited firm commitment towards intensified maritime cooperation with the Indian Ocean region partner nations also. So we are on it, but at the same time, there are different difficulties that we are facing. We will be talking about different countries, in the next session, which is going to be India's relation with different countries in the Indian Ocean region. For example, we'll discuss with Mauritius, Seychelles, and we'll also discuss the idea of blue economy, which is so much in news. For the time being, you can write down a question, everyone. How does the dynamic of multilateralism, how does the dynamic of multilateralism have an impact on development, and other related issues in the Indian Ocean region. Comment. In the Indian Ocean region, comment. This question is for 10 marks. You have to write it for 150 words, or you can write it for 15 marks, 250 words, whatever. Please try to make proper structure of introduction, main body, conclusion, or a plain white sheet with margins on both the sides. You all can submit your answers on WhatsApp. The number is given in the description. I'm still writing down the number for the new students, so that all those who are watching this video today here, they can associate with us, and we can also let you know if you have to join any batches over here. You can also do that. So this is the number that you can WhatsApp on your answers of this question. They will be evaluated within 24 to 48 hours and send you back. And if you have to join the live classes, you can let us know as well. The IR series is being uploaded, but we'll not upload all the series because these are live lectures that are being conducted on Vani Academy right now in the live class. Other lectures are also which are conducted. We keep uploading the classes over here. But if you have to avail the classes, definitely please contact on this number so that you get to understand how you can actually take the sessions here. Thank you for watching the lecture. Like the channel, subscribe the channel, and at the same time, please share, because this is the most authentic and original effort that we are trying to do here with you people. Thank you very much.